years. 15 साल से जानता हूँ मैं उसमें, and that's the reason why I'm there. See, I would like to answer for this a bit. Rajiv does not believe in magic at all. I'm really grateful he's come all the way here to help me and support me. The best part is I've known him for like 15 years. He's seen me like growing right from my designing time to this, and he has been there. जी 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 तो मेरा काम मैं काफ़ी वक्त से जारी जाती हूँ मेरी इंडस्ट्री में, पर मेरा ये था कि मैं बहुत शर्माती थी लोगों से बात करने के लिए, लोगों के सामने आने के लिए। तो डबल एस का रीज़न वो था कि वी मेड इट टू 23 which is a number for communication. देखिए, मैं मैजिक में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं किसी भी चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ, ना एस्ट्रोलॉजी में, ना न्यूमरोलॉजी में, ना ही भगवान में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं ये जो सब्जेक्ट है इस पे इनकी मास्टरी है और मैं ईशा पे बिलीव करता हूँ, बिकॉज मैंने उन्हें बहुत ही करीब से जाना है पिछले 15 सालों से। 15 साल में इनकी जो स्ट्रगल रही है, जो इन्होंने अलग अलग चीज़ों पे अलग-अलग चीज़ों पे इन्होंने रिसर्च की, स्टार्ट किए, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सीखी मेरे सामने इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे मास्टरी हासिल की और उसके बाद आज एक एंटरप्रेन्योर हैं, सेल्फ मेड वुमन है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ईशा को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ और मेरी दिल से दुआ है कि ये बहुत आगे जाएँ, बहुत तरक्की करें और इनकी बुक से बहुत लोगों को बेनिफिट भी हो। राजीव, have you read the book? नॉट येट, अभी तक मैंने नहीं पढ़ी है बुक, अभी मैं लेके जाऊँगा और पढ़ूँगा। लेकिन मैंने इसका सिनॉप्सिस और जिस्ट पढ़ा है मैंने, और जो लोग बिलीव करते हैं आई थिंक उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक होगी। मैं तो क्या नॉन बिलीवर हूँ, मैं तो सिर्फ मज़े के लिए और सारे ऑयल यूज़ करूँगा, बट आई थिंक जो लोग बिलीव करते हैं उनके लिए आई एम वेरी श्योर इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल बुक। Isha, when was the time when you actually wanted to write something on such a... See, this, as I said, I am the first person in India who started Wiccan oils as a workshop. It was about 9 years ago. And I was been selling these oils and people are using it, buying it and everything. But then there was a point of time that I thought that, you know, it's getting too much where people are overcharging these oils, like my students selling one bottles for 4,000 rupees, which is quite an exorbitant price for everybody to afford. So I thought might as well just make it as a book and make it easy for people to have everything. They can access this oils, they can make their own. And they can also play with this oils. It's not that what formulas I have given, they have to stick to that. I've given description of each and every herb. So if they are well versed with that subject, they can play with different herbs and make different oils instead. And someone from your family or your colleagues or someone, have them read this book? So Nishita is here. She was the one, she actually helped me with the publications and everything. And my clients, there are few clients who will come over who have actually used the oils. Like one of my friends, she was reselling my oils. She purchased, one of her client purchased the oil from her thing to get married to the man of like their brother, and she's actually got married. So that's a written thing here. So the magic is being used on us only. Forget outside the world. Any chances Rajiv can use the magic or something like that? Do you have anything? See, I believe magic is a very existence. So when people say, do you believe in magic, or magic is dark, or magic is white, magic cannot be black and white firstly. And himself, like being at wherever he is, his success is also magic, sheer magic, just that he has a different ability to show his magic. Yeah, you can also say I'm magical myself. You are magic. Definitely. होता है, आपका हर इंसान का जादू चलता है, हर फील्ड में आपका जादू चलता है। आप अगर डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, एक्टर हैं, आपका जादू चलता है, और अगर नहीं चलता तो आप भी नहीं चलते हैं, सिंपल रहता है। नहीं, ये वो मंच नहीं है जहाँ पे अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करूँ। अच्छा ईशा, पब्लिकेशन के बारे में प्लीज कुछ बता दीजिए कि कब तक ऑडियंस को पढ़ने के लिए मिलेगी? ये ऑलरेडी सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे अवेलेबल है, लोग मेरे से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, सो इट्स ऑलरेडी देयर ऑन द मार्केट. It is being launched on all the online portals, including India and outside, for a week now, just because we were waiting for the launch, so we holded the whole thing. अच्छा राजीव, अगर किसी को गिफ्ट करना हो ये बुक तो कौन होगा? फ्रेंड और समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री? That's true. मैं गिफ्ट करूँगा उसी इंसान को जो बिलीव करता हो। तो मेरा अगर को मुझे
किसी को गिफ्ट करनी हो तो ऑब्वियसली somebody has to believe in it and I wouldn't know कि मेरे सर्कल में कौन है जो बिलीव करते हैं, but I would definitely want to gift to all those जो अपने नाम के आगे एक और अल्फ़ाबेट जोड़ लेते हैं, या people who believe in numerology or other things, and ऐसे कोई नाम तो जहन में नहीं है, but I would give it to be all those people who believe in these things. Don't you think Ekta Kapoor is the perfect person? She's the one who started K. I know, but Ekta wouldn't have time to read all this right now. She's busy with so many things right now. Okay, Rajiv, what's happening in a current scenario is sitting with a female author. What's happening with Tanushree Datta? She's accusing Nana Patekar. What's your take on that? Being a part of the industry, being a Bollywood person, what's your take on that? See, my take is that be it a man or a woman, anyone who suffers, has the right to speak up and should speak up. And when the one who is the oppressor should be criticized. But here in the case of Tanushree and Nana Patekar, I think Nana Patekar is also a celebrated actor. We haven't heard his version of sides, so it will be very wrong on my part to comment on it, because neither I was a witness to it, nor have I heard directly from Tanushree or from Nana Patekar. Sir, but then yes, anyone who suffers should stand up and speak up, and the oppressor should be criticized and should own up to one's mistakes, be it a man or a woman. सर जी, अनूप जी गए हैं बैंक मंत्री आपको जी बॉस में जी फिलहाल तो अनूप जी के लिए मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, अगर करूँगी तो आपको डेफिनेटली बता दूँगी। अभी तो फिलहाल वो अपने प्यार का जादू ही चला रहे हैं।